and an increase in the rise of class events by more than 25% due to climate change. Natural forces cannot be tamed, but communities can be equipped for preempt large-scale disasters. The government is majorly investing in rescue and relief measures during the flood. While these immediate and short-term actions are necessary, there has been no long-term measures in sight of mitigate the issue. Similarly, since 1950, over 4.27 lakh hectares, 7.40% of the Assam's total area, have eroded along the Brahmaputra and its tributaries, with an annual average loss of nearly 8,000 hectares. This has led to the disappearance of 2,500 villages, affecting lakhs of people who reside on embankments. Even with such severity of the situation in Assam, the absence of proper framework to officially declare flood and erosion as national calamities hinders in combating these recurring challenges effectively. Therefore, I urge Honorable Union Home Minister to immediately spearhead the development of necessary legislative measures that can enable the formal declaration of floods and erosion as national calamities. Thank you, sir. Thank you very much. Item number 11, Shri Jasmeer Singh ji. धन्यवाद चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आना चाहता हूं। ये मुद्दा है प्राइवेट बैंकों की तरफ से किसान की हो रही लूट का। सर, अगर कोई भी आदमी कार का लोन लेता है तो उसको 7.8% से 10% तक उससे ब्याज लिया जाता है। अगर कोई भी बिजनेस के लिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अगर कर्जा लेता है उसे 7.25% टू 9% लोन लिया जाता है सर। जो दूसरे हाउसिंग लोन है 8.5 से 9.5% उससे ब्याज दिया जाता है। सर, हैरानी वाली बात है कि अगर किसान अपनी लिमिट बनाता है खेती करने के लिए, उससे 15% ब्याज लिया जाता है। सर, इससे भी आगे अगर आप कोई नया ट्रैक्टर लेते हो, आप कंबाइन लेते हो, जहां कोई भी किसान फार्म इक्विपमेंट लेता है तो आप हैरान रह जाएंगे, 22% तक प्राइवेट बैंक जो उस पर ब्याज वसूलते हैं सर। सर, कैसे किसान ये इतना ब्याज दे पाएगा? इसको रैशनलाइज करना चाहिए। ये केवल मेरा नहीं या ऑपोजिशन का नहीं, ये हमारा सभी का मुद्दा है। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि बैंकों को जो किसान के साथ ये लूट हो रही है इससे रोका जाए। दूसरा सर, इसी के माध्यम से कि अगर आपने देखा जाए कॉरपोरेट के हमने तकरीबन 9.5 लाख करोड़ से ज्यादा जो है लोन्स राइट ऑफ किए हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये किसानों का तो सिर्फ 5 लाख करोड़ है, इसको भी राइट ऑफ करके किसान जो अपने गले में फंदा डालता है उसके छुटकारा दिलाया जाए, इस जो कर्जा से किसान को मुक्त किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आइटम नंबर 12, श्रीमती अपरूपा पोद्दार जी। Thank you, sir, for giving me this opportunity, sir. Through you, I would like to draw the attention of this government that towards the vacancies position for the SC, STs and the other backward classes by the Union government. Through the data provided by the Ministry of Railways and Education, it is evident that we are far behind in fulfilling our commitment towards the inclusion and equality towards the society. In the Indian Railways alone, there exist 86,211 vacancies for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. It is disheartening that 18,600 of these vacancies have been carried over to this previous year.
Even the parallel pattern is even witnessed in the central universities where 46% of the reserved for 46% of the reserved are of OBCs, 44% of ST, and 37 for SCs in central universities still remain unoccupied. Even in our most prestigious institutions like IITs, 2,750 faculties of SC, ST, OBCs, and EWS are remaining vacant. This highlights the magnitude of underrepresentation in our society. It is the constitutional duty of the government to ensure the livelihood and the social upliftment of these communities. In 2014, this government promised to create 25 crore more jobs. It is imperative that the government fulfill this commitment. I appeal to the government to address the vacancies reserved for SC, STs and OBCs with a sense of urgency and transparency in this recruitment process. Thank you, sir. Thank you very much. Item number 13, Sri Antony ji. Thank you, Chairman. Chairman, I request the government to kindly enhance the upper limit of salary from rupees 21,000 to 40,000 for availing ESA benefits to all eligible workers in the private sector. An employee getting a monthly salary above 21,000 is out of the ESA coverage benefits. It should be noted that having understood the growing cost of living in the country, the 6th Pay Commission under Congress-led UPA government recommended a salary hike for government jobs. After this, employees in the private sector also revised the salaries of their employees. As a result, a significant section of workers in the private sector receive monthly salaries beyond 21,000. Hence, these employees and their dependents get out of the purview of the ESA benefits. Therefore, I request the government to enhance the salary limit up to rupees 40,000 per month so that several lakhs of beneficiaries will continue to get ESA benefits. Thank you. Thank you very much. Thank you. आप लिख कर दे दीजिए. Item number 14, Sri Kotagiri Sridhar ji. Thank you, sir. Speaker, sir. Exactly 10 years ago, in the 16th Loksabha, the great state of Andhra Pradesh was divided by making several promises under the AP Reorganization Act. One of the promise was for providing a South Coastal Railway Zone in Visakhapatnam. It was finally approved in this Lok Sabha, the 17th Lok Sabha, but in 2019, but it hasn't still come under a reality. The DPR I hear is still under review. No fixed time frame was fixed to make this an operational railway zone. While special status is still pending, people of Andhra Pradesh are eagerly appealing for making other promises a reality. And I request government to make our dream for a South Coastal Railway Zone a reality, Speaker, sir. Also, on a side note, there is a new Vande Bharat Express from Hyderabad to Visakhapatnam. And my constituency is Eluru. It's a district headquarters with almost 2 lakh people and almost 1 million people around Eluru. But unfortunately, there is no stop in Eluru, which the next stop from Eluru is almost 200 kilometers in Rajahmundry. So I request Railway Minister and Railway Ministry to consider Eluru to have a stop for Vande Bharat Express between Hyderabad and Visakhapatnam.
resources should be exhausted in order to persuade the Qatar government in order to get rid of those ex-Navy personnel from the custody and from this kind of charges, because it is the concern of the nation, it is the concern of those families. So I would suggest the government that they should be proactive and they should strive hard to get rid of those hapless ex-Navy personnel of our country. Thank you. Sri Suresh Kodikunil ji. Sir, sir, the famous and well-known agriculture scientist, Dr. M.S. Swaminathan, Padma Vibhushan Dr. M.S. Swaminathan, passed away 3 months back in Chennai. Sir, the country is very much aware that Dr. M.S. Swaminathan's contribution in our agriculture sector, as well as the self-sufficient of the food security. But at the same time, the NDA government chose to disrespect the legend when he passed away, as the government did not accord any rightful honor or paid tributes or marks of respect to Dr. M.S. Swaminathan, and displayed their arrogant and ungrateful attitude towards the great scientist. The government also did not send a proper representative of the union government to be present throughout the funeral function in Chennai. So his family belongs to my constituency, Kuttanad, and also he has given so many contributions to the agriculture sector in Kerala also. Sir, I demand through you, sir, at least now the government must take steps in granting the rightful honors to Dr. M.S. Swaminathan by awarding the citation of Bharat Ratna posthumous, and further Dr. M.S. Swaminathan's life-size statue be erected in the new Parliament building, along with a portrait installed in the central hall of the Parliament. And also, I suggested to be named Indian Council of Agriculture Reserve, ICAR, to be immediately renamed Dr. M.S. Swaminathan Institute of Agriculture Research. The government must rectify its mistake and honor Dr. M.S. Swaminathan for his extraordinary contribution to Indian agriculture and the national food security, which is considered as the pillar of national security. With these words, I would like to urgently invite Honorable Government through you, sir, Dr. M.S. Swaminathan. The country cannot ignore him. So, Honorable Ministers are here, Cabinet Ministers are here. Honorable Cabinet Ministers are here. Smriti Irani, Dharmendra Pradhan is here, and Anurag Singh Thakur is here. So, you are ignoring. Kindly, Sir, kindly. My name being called out without substance and without information by the honorable member. No. Secondly, sir, I am sure that once the member lays the issue at hand on the floor, the appropriate minister will respond. But I would request through you, sir, that the honorable member not be in a spiteful position just because his party had to face a humiliating defeat just yesterday after the election results were announced. What is the correction, sir? बैठ जाइए वैज्ञानिकों पे हम पॉलिटिकल नहीं बनाते हैं। Government spokesman Anurag Singh Thakur is here. He can 16 श्री ज्योतिर्मय सिंह महातो ज्योतिर्मय आइटम नंबर 17 श्री बसंत कुमार पंडा इनका माइक कर
सर मैं इधर रेस करना चाहूंगी जो 2019 में 550 साल गुरु नानक देव जी के गुरपुरब पे इस सरकार की तरफ से पंडा जी बोल रहे हैं, बसंत कुमार पंडा। मैडम आपका नहीं है बसंत कुमार। आप माइक की ओर आइए, माइक की ओर आइए। हाँ ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार पिछले 9 वर्षों से हमारे देश के विभिन्न क्षेत्र के कलाकारों को कौशल बढ़ाने के लिए, उससे विश्व स्तर पर ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं अपनी सरकार को और भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और देशों में कलाकार प्रतियोगिता, कलाकार कला संगमों के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। मैं आपका ध्यान उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्र के और आकर्षित करना चाहता हूं, जहां ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्मारक स्थित होने के साथ ही पश्चिम उड़ीसा में भवानीपटना पश्चिम उड़ीसा का केंद्र बिंदु है। कालाहांडी, कोरापुट और नुआपड़ा के कई स्थानों को भारत का दूसरा कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जहां विशाल घाटी, पहाड़, बड़े पानी के झरने, डैम, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक सौंदर्यीकरण से भरपूर अद्भुत नजारा स्थित है। और ये क्षेत्र आदिवासी कला, गीत, संगीत, नृत्य और उड़ीसा के विभिन्न प्रकार बाजा और का उद्गम स्थल है, जहां हमारे पश्चिम क्षेत्र के प्रतिभापूर्ण कलाकार अपने प्रतिभा को दिखा सकते हैं, जिससे वो वंचित हैं। पश्चिम उड़ीसा में फिल्म, जहां हमारे पश्चिम क्षेत्र के पश्चिम उड़ीसा में फिल्म स्टूडियो न होने के कारण यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पश्चिम उड़ीसा हमेशा से उपेक्षा का कारण बना हुआ है और राज्य सरकार स्टेप मदर एटीट्यूड हमारे क्षेत्र के प्रति दिखाते आ रहे हैं। उड़ीसा में सिर्फ एक कलिंगा स्टूडियो जो कि कटक में स्थित है। मेरा आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मामलों को गंभीरता से ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को निर्देशित कर पश्चिम उड़ीसा में भवानीपटना के पास अकादमिक फिल्म प्रशिक्षण स्कूल और साथ में राष्ट्रीय फिल्म स्टूडियो स्थापित करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके भूमि आवंटन हेतु आग्रह किया जाए, ताकि जहां जल्द से जल्द एक फिल्म स्टूडियो की शुरुआत हो सके और हमारे आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा मिले। पश्चिम उड़ीसा की बड़ी आबादी आदिवासी बाहुल्य है। यहाँ से आदिवासी युवाओं को राष्ट्रीय मंच पर भाग लेने और पश्चिम क्षेत्र के कलाकारों को विश्व स्तर पर अपनी कला को प्रदर्शित करके मान सम्मान बढ़ाने के लिए क्षेत्र का बढ़ चढ़कर भाग लेने का मौका मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर कदम उठाया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आइटम नंबर 18 श्री जुगल किशोर शर्मा जी। धन्यवाद उपसभापति जी। महोदय, मैं सदन के माध्यम से जल संसाधन मंत्रालय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अखनूर, खोड़ और जोड़ियां की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां पर बहुत बड़ा एक दरियाए चिनाब है।
और दरियाए चिनाब में जब भी बाढ़ आती है तो सारे क्षेत्र की जो कृषि योग्य भूमि है वो बह जाती है और दरियाए बहा कर ले जाता है। लेकिन अब हद तो अब इतनी हो गई है कि जब भी बाढ़ आती है, जब बर्फ पिघलने से जो पानी दरिया का बढ़ता है, अब वो गांव में घुसना शुरू कर गया है। और महोदय, ये जो कृषि योग्य भूमि है ये तो बह गई है, अब गांव जो है वो बहने की कगार पर जो आ गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गांव अब चिनाब दरिया की लपेट में आ रहे हैं, अगर हमने कोई ठोस कदम उन गांव को बचाने के लिए नहीं किए तो वो गांव के गांव जो है वो बह जाएंगे और लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि अखनूर, गुर्गी टक्की, संग्रामपुर, मक्याला, चंजवा, देवीपुर, चक सिकंदर, गैर और बकोर और इसके अलावा भी कुछ छोटे गांव भी हैं जो दरिया चिनाब की लपेट में आ गए हैं। मेरा आपसे प्रार्थना है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि देखिए, ये पहले बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बना था, लेकिन अब 55 करोड़ की लागत से वहां पर एक बांध बांधने की योजना बनी है ताकि बांध बांधने से उन गांव को जो है वो बचाया जाए। ये जो 55 करोड़ का प्रोजेक्ट है बनकर जल संसाधन मंत्रालय में आया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जल संसाधन मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे और ये 55 करोड़ की जो राशि है ये रिलीज करे ताकि वहां पर एक बांध बनाया जाए और बांध की वजह से ये जो गांव हैं इनको बचाया जाए। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है अपने सारे उस क्षेत्र के लिए। तो मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं, सदन से भी प्रार्थना करता हूं और जल संसाधन मंत्रालय से भी प्रार्थना करता हूं कि जो अखनूर के साथ साथ लगने वाले जितने भी गांव हैं इन्हें बचाने का प्रयास किया जाए और जो 55 करोड़ की राशि जो है वो इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया जाए ताकि वहां पर एक अच्छा बांध बने और इन गांव को बचाया जा सके। धन्यवाद। धन्यवाद जी। आइटम नंबर 19 महेश साहू जी। काइंडली माइक ऑन। अधिष्ठाता महोदय, ए प्रसंग को आपनक पाखरे उपस्थापन करिबा पूर्वरु मु आपनकु सादर निमंत्रण करूची ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्रर 3टी जातीय राजपथ 49 पालड़ा ठारू केउंझर एवं 55 कटक ठारू संबलपुर तत्सहित पितिरी ठारू डुबुरी जो जातीय राजपथर अवस्था एभली एक संकटापन्न अवस्था अच्छी। केंद्रर विकास कार्यक्रम रे ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र 1,00,000 कोटी टंका वर्ष को देउथला बेले विकास परिवर्ते से क्षेत्र रे आज पर्यंत 326 जन विनाश होइचंती, विभिन्न दुर्घटना रे मृत्यु घटिचंती। ए क्षेत्र रे मु आपन को निवेदन करिबा पई चाहे, केंद्र सरकार पितरी ठारू डुबरी रास्ता को लोकार्पण करथिले किंतु सेठारे ब्राह्मणी रामियाल एवं डमसोड़ा ठारे पोल निर्माण होगा संभव है नहीं, संपूर्ण है नहीं। पितिरी ठारे मध्य ओवरब्रिज एवं अंडरपास निर्माण शेष है नहीं। अथच केंद्र सरकार विभिन्न दृष्टिकोण पितिरी ठारू डुबुरी रास्ता को गृह मंत्री केंद्र शिक्षा मंत्री द्वारा लोकार्पण हैला परे भी मध्य से कार्यक्रम एते धीर गति चली संपूर्ण है नहीं। पालड़ा ठारू केउंझर एवं आपनकर पितिरी ठारू डुबुरी कटक ठारू संबलपुर बारंबार रोड सेफ्टी मीटिंग रे आलोचना पर्यालोचना हला परे माननीय मंत्री सहित आलोचना परे एवं 2024 मार्च सुधा शेष हो बोली घोषणा थिला परे मध्य मु निवेदन करिबा पई चाहे केंद्र सरकार को निजे स्वचक्षुरे देखंतु 2024 मार्च सुधा शेष होबा आदौ संभव नुहे। 2025 मार्च जगह चलिबो ए कथा केंद्र सरकार विकास रो ये गोटे ज्वलंत प्रमाण 3टी जातीय राजपथ पई मु आशा करिबो अधिष्ठाता महोदय आपन को निवेदन करिबा पई चाहे केंद्र सरकार जो हिसाब रे ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र राजस्व पाउछंती तार सामंजस्यतम अनुदान रे ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र अधिक उन्नति हेई परिथांता किंतु केंद्र सरकार ए बाबद रे कोनस प्रकार नजर दउनांती। मु आशा करिबा आपन जरिया रे केंद्र शिक्षा मंत्री पाखरे बसिचंती सुनुचंती से अनुभव करिबा दरकार
केंद्र प्रति राज्यर जो दायित्व एवं लोकसभा क्षेत्र जो सैक्रिफाइस से कथा को गुरुत्व प्रदान करी कार्यक्रम को आगक नापी आपण जरिया केंद्र सरकार को अनुरोध करने सहित चेतावनी देउछि। थैंक यू वेरी मच। श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी। श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, I want to raise one important issue related to my state. Sir, Manrega, Awas Yojana, health issues, National Health Mission, all money allotted by Government of India have been kept blocked since last 2 years, amounting up to rupees 18,000 crores. We few MPs and our ministers came to Delhi to meet Honorable Minister, not the Cabinet Minister, sir. It is Minister of State. Surprisingly, we were kept waiting for 2 hours in the waiting hall, were offered tea, and ultimately after 2.5 hours, when we went for the meeting, then she left behind the door. We were lifted bodily. आपका इश्यू की बात करो। मेरा इश्यू ये है, we were lifted by bodily. Senior MPs, 10 ministers, and were taken 20 kilometers away from Delhi. We demand, sir, that Manrega allotment, Awas Yojana allotment should be sent to state government without further delay. We are keen to place our demand to Prime Minister of India, including Chief Minister, and we hope this issue to be discussed on the floor of the House without further delay, and economic blockade should not be allowed to be created in the state of West Bengal. माननीय मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी। सभापति महोदय, दादा, नहीं चित भी मेरी पटवी मधी मत करो भाई। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन की वरिष्ठ सदस्य सुदीप जी ने कुछ विषय उठाया भारत सरकार के बारे में, मनरेगा के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, उनको भारत सरकार ने ब्लॉकेड किया है। अध्यक्ष महोदय, ये तथ्य सही नहीं है। ये भारत सरकार की ओर से बंगाल की गरीबों की पैसा ले जाते हैं और उसको तोलाबाजी करते हैं, कटमनी रखते हैं, यही मूल कारण है। देश की सभी राज्य वित्तीय श्रृंखला में रहते हैं। बंगाल उसके ऊपर खुद को मानता है, बंगाल की सरकार खुद को उसके ऊपर मानता है। सर, मैं ऑन रिकॉर्ड on the floor of House, I would like to remind and like to mention, in the PM Poshan Yojana, in the midday meal scheme, they have misappropriated 4,000 crore. 4,000 crore. Government of India has given inquiry to CBI. Everything will come out on the front. Everything will come out to the table. इनकी दिक्कत है, ये गरीबों की पैसा लूट करते हैं, पार्टीबाजी में पैसा खर्चा करते हैं। इनके ऊपर इंक्वायरी होगा। ये सब इनके आधे दर्जन मंत्री जेल में है। सभापति महोदय, इनकी शिक्षा मंत्री जेल में है, इनके आधे दर्जन मंत्री जेल में है। इनको डर लगने लगा है, इनकी लीडरशिप जेल में जाएगा। इसी डर से ये सदन के समय को खराब करते हैं। और श्री हसनैन मसूदी जी, श्री हसनैन मस्कानी, जनाब मसूदी जी बोलेंगे, वो रिकॉर्ड में जाएगा। जनाब, जम्मू कश्मीर को कई एक संगीन मसाइल का सामना है। सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ कोई लोकशाही नहीं है, अफसरशाही से हम जूझ रहे हैं पिछले 6 साल से। आज जबकि जश्न मनाया जा रहा है 5 रियासतों में इंतखाबात के नतीजे का, जम्मू कश्मीर में पिछले 6 साल से हमें इंतजार है इंतखाबात का। अब वो संगीन मसला है, लेकिन सबसे बड़ा संगीन मसला जो आज है वो बिजली का बहरान है। जनाब, 3215 मेगावाट हम बिजली पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं, लेकिन आजकल 16 घंटे का वहाँ पर शटडाउन रहता है, ठिठुरती सर्दी में, सब जीरो टेम्परेचर में। सर, मेरा मुतालबा होगा पहले ये रैशनलाइज किया जाए, जो बिजली की कटौती है वो रैशनलाइज की जाए। दूसरी बात ये
हमारे जो एनएचपीसी के साथ पास हमारे जो पावर जनरेशन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो यूनिट्स है वो वापस दे जाए, क्योंकि बहुत सारा पैसा एनएचपीसी ने उससे हासिल किया। सलाल वाला एग्रीमेंट था 25 साल तक रहेगा, लेकिन आज वो 50 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो तब तक बिजली का मसला हल नहीं होगा जब तक कि आप हमारे एनएचपीसी के जो हमने दिए थे वो ओडी 1 हो, ओडी 2 हो, बागलियार हो या सलाल हो, जो भी वहां पर वो वापस दीजिए। दूसरी बात यह है कि आज भी स्मार्ट मीटर के नाम पर जो हमारे एसटी है, बीपीएल है और जो आखिरी पायदान पर है, उनसे बिजली फीस 100,000 से ज्यादा लिया जा रहा है, जबकि पास की रियासतों में 0 बिजली बिल आता है। पंजाब में, दिल्ली में, आपके जो शासन है उत्तराखंड में, और आपने जो वादे किए राजस्थान में, एमपी में बिजली कम कीमत पर देने का या 0 बिल देने का, जम्मू कश्मीर के साथ एक अलग ही व्यवहार किया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है ही नहीं, ऐसा व्यवहार किया जाता है। पास की रियासत पंजाब में आधी आबादी को 0 बिल आता है और हमारे एसटी को, बीपीएल को, एससी को और जो आखिरी पायदान पर है उनसे बिजली इतना बिजली बिल देता है बिजली खराब करने के बजाय। तो मेरा ये मुतालबा होगा कि एनएचपीसी के पास जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो वापस दिए जाए। पीरियड खत्म हो चुका है, फिर भी ले रही है एनएचपीसी। और दूसरी बात है वहां पर रैशनलाइज किया जाए जो भी शटडाउन है, ताकि लोगों को ज्यादा मुश्किलात का सामना हो। थैंक यू। श्री जगदम्बिका पाल जी। अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने एक अत्यंत गंभीर चिंता के विषय को इस सदन में मुझे उठाने का अवसर दिया है। ये चिंता केवल हमारे लिए नहीं है, सत्ता पक्ष के लिए नहीं, बल्कि चाहे सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, संपूर्ण समाज के लिए। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जिस तरह से डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक यथार्थबाजी, ऐसा लगता है कि जैसे किसी का चेहरा, किसी की वॉइस से जिस तरह से नकली वीडियो या चित्र या इस तरह से चीज़ें वायरल की जा रही हैं, वो देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है। समाज में एक इस तरह की गलत सूचनाएं प्रसारित करके लोगों के बीच में जिस तरीके का चरित्र हनन हो या इस तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न हो, तो ये अभी तक इस डीप फेक के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तकनीक से ये इसका प्रचार प्रसार कुछ दिनों से इतना बढ़ा है, अभी तक इस पे कोई लेजिस्लेशन भी नहीं है, कोई विधायी कानून भी नहीं है। इसलिए अधिष्ठाता महोदय, इस गंभीर सवाल पे सरकार भी सोच रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो पूरे देश में बढ़े, पिछले दिनों आपने देखा कि रश्मिका मंदाना हो या आलिया भट्ट हो, इस तरह से चाहे फिल्म स्टार हो, पब्लिक लाइफ के जीवन के चाहे सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सांसद हों, हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं और इस तकनीक का दुरुपयोग करके और अगर जिस तरह की चीज़ों को वायरल कर देते हैं वीडियो बना करके, तो वो शायद पूरी लाइफ के लिए एक सवालिया निशान लग जाता है। तो इसलिए मैं इस सदन में चाहता हूँ कि इस विषय पे जो एक पूरे समाज के लिए एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस डीप फेक का एक प्रचार प्रसार हो रहा है और इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जो देश की एकता और अखंडता के लिए, और इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए जनता की राय हो, जनता का मैंडेट हो, उसके बावजूद भी एक डीप फेक के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी पिछले दिनों इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समझता हूं कि इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं, धन्यवाद जी, इस पर निश्चित तौर से प्रभावी कार्रवाई हो, आवश्यकता हो तो इसके लिए मजबूत लेजिस्लेशन बनाने का कार्य करे सरकार। धन्यवाद। श्री अमर सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं दो ਇਹੋ ਜਿਹੇ इशू इस हाउस चुकना चाहना जिन्ना ते दोवां ते मैं पहला बोल चुकिया। मैं MP हाँ श्री फतेहगढ़ साहब दा। ਇਹ ਉਹ जगह जिथे औरंगजेब दे राज विच गवर्नर वजीर खान ने साडे 10वें पातशाह दे दोवें साहिबजादियां नूं जिंदा नीहां च चिणता सी। मैं बेनती कीती सी केंद्र सरकार नूं कि ਉਹ फतेहगढ़ साहब नूं इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट च लिआंदा जावे और ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ फैसिलिटी ਦਿੱਤੀਆਂ जाण कि सारी सिख संगत और दूसरे लोग दर्शन कर सकन। दूसरी गल मैं कई बार कह चुकिया किसानां दी गल
देखो ਜਦੋਂ फार्मर एजुटेशन खत्म होया ते केंद्र सरकार ने एक वादा किया सी कि जिस तरह पैडी और वीट ते MSP मिलती है ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ श्री NK प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much. Sir. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for affording me this opportunity to raise a very serious matter of urgent concern as far as my state, Kerala, is concerned. Sir, this is a matter in respect of the coastal zone management plan to be provided by the state governments. Sir, it is well known that the government of India, by the notification in the year 2019, the coastal zone management plan is one of the essential pre-requirements so as to implement the amendment to the coastal regulations on 2019 notification. So the coastal area people are, especially the fishermen community in my state, is finding it very difficult to construct the houses, and even for their livelihood purposes, they are finding it very difficult to continue their life in the coastal area because of this coastal zone regulation management plan. It is quite unfortunate to note that the state government has not completed the process of preparing the coastal zone management plan. Even the people's representatives have not been taken into confidence in preparing the coastal zone management plan. In my constituency, the most of the coastal area villages are more than that of the urbanized panchayat. That has not been taken into consideration in the draft plan preparation. So the draft plan is prepared without considering the developments in the coastal panchayats. The coastal panchayats in my constituency in particular and the state of Kerala in total are developed than the municipalities and corporations which comes under the urban zone. Sir, hence it is highly necessary to prepare a plan considering the development in coastal panchayats. It is highly necessary to publish the CRS notification considering the aforesaid facts so as to protect the coastal population in Kerala, particularly Kollam, my Loksabha constituency. So I urge upon the government of India, if the 2019 notification of the coastal regulation has to be made effective, the coastal zone management plan has to be issued by the state government. So I urge upon the government of India to intervene in this matter so as to get the benefits to the coastal fishermen and the people living in the coastal area by giving a direction from the government of India to implement the notification by preparing the coastal management plan. Thank you very much, sir. श्री रंग अप्पा बरने जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में पुणे से लोनावाड़ा तक लोकल ट्रेन चलती है, जबकि कोविड के बाद दोपहर के समय का 11:30 से 2:30 बजे के समय लोकल ट्रेन बंद की, जबकि सभी उसी समय सभी मालगाड़ियाँ उस रूट पे चलती है। जब मैं रेलवे मिनिस्टर को मिला था, उसने बताया कि मेंटेनेंस के टाइम दोपहर के टाइम लोकल ट्रेन नहीं चलाएगी, जबकि मालगाड़ी चलती है तो लोकल ट्रेन क्यों नहीं चलती। दोपहर के टाइम स्कूल जाने वाले बच्चे, कई सारी कर्मचारी महिलाएं, किसान भी दूध बेचने पुणे तक जाते हैं तो उनका भी 2-2.5 घंटे रेलवे स्टेशन पर वेट करना पड़ता है। मैं कई बार रेलवे मिनिस्टर को मिला हूँ इस बारे में, जबकि रेलवे बोर्ड ने, रेलवे मंत्रालय ने पूना से लोनावाड़ा तक तीसरा और चौथा ट्रैक को मंजूरी दी है। 3-4 साल हुए, सुरेश प्रभु जी मिनिस्टर थे तब मंजूरी दिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने मीटिंग लगा के उन्होंने ये वादा भी किया है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेलवे बोर्ड के तरफ उसमें सहायता करेगी। मैं आपके द्वारा ये मांग करता हूँ कि पुणे से लोनावाड़ा जाने वाली लोकल ट्रेन दोपहर के समय, खासकर 11:30 से 2:30 के समय तक चलाने की मांग करता हूँ। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। आदरणीय सभापति जी, केंद्र सरकार की योजना RDSS के अंतर्गत
विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और विस्तार की दृष्टि से कार्य मेरठ जनपद के अंदर मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर चल रहा है, लेकिन जिस कंपनी को इसका काम दिया गया है उसकी गति इतनी धीमी है कि काम लगभग हो ही नहीं रहा है। विद्युत समिति का अध्यक्ष होने के नाते 2 बैठकों में मैंने इस बात की चर्चा की, अन्य सब जनप्रतिनिधियों ने भी इस विषय में चिंता व्यक्त की, परंतु किसी भी प्रकार की उसके काम के अंदर गति नहीं आई है। लिखित रूप में जो एसीज हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं, उनके द्वारा लिखने पर भी कोई इसमें गति उसकी बढ़ी नहीं है। अभी तक केवल माननीय सभापति जी 6% काम हुआ है, यानी जो दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था अभी तक उसकी ये गति है। मेरा ये अनुरोध ये है, मैं उस कंपनी का नाम नहीं यहाँ पर सदन में लेना चाहता हूँ, परंतु उसकी कार्य पद्धति की समीक्षा की जाए और उसके संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हो वो सरकार करे, माननीय मंत्री जी करें, ताकि जो अपेक्षित काम है आरडीएसएस के अंदर वो अंतर्गत बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मेरे जिले में सर, जो मेरे लोकसभा का तो पार्ट नहीं है, लेकिन एनआरएचएम का अध्यक्ष होने के नाते मैं उस जिले का अध्यक्ष हूं। मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है सुंदर पहाड़ी, और पिछले 1 महीने से प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप जो पहाड़िया जनजाति है उनके 20 बच्चों की मौत हो गई है। मलेरिया या इसी तरह का कोई ऐसा वायरल है जिसको कि राज्य सरकार देख नहीं पा रही है। मैं और हमारे जो नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी दोनों विजिट कर चुके हैं लिट्टी पाड़ा और सुंदर पहाड़ी का ये हाल है। और हालात ये हैं सर कि ना वहाँ डॉक्टर की कोई व्यवस्था है और ना, आपको आश्चर्य होगा, जो पीटीजी को 100% हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं उनका नाम लिस्ट तक में नहीं है सर। एक भी आदिवासी परिवार को, आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां, एक भी आदिवासी को वहां ना प्रधानमंत्री आवास है, ना डॉक्टर की सुविधा है। और रोड का ये हालत है सर कि हम लोग जो है, मेरा ये हाथ छिल गया है सर कि मैं खुद ही मोटरसाइकिल से गिर गया, मोटरसाइकिल से भी मैं वहां चढ़ नहीं पाया सर। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि इस तरह आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने वाला, आदिवासियों के खिलाफ नहीं काम करने वाला और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ाने वाला मेरे इलाके में जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए, यहाँ से केंद्रीय टीम को भेजा जाए और बच्चे जो मर रहे हैं प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप पहाड़िया के, उनकी जान बचाएगी। थैंक यू वेरी मच। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Act. A bill passed by both houses of parliament and assented to by the president. Adjournment of the sitting of the house. Termination of the sitting of the house, which meets again at the same time appointed for the next sitting.
adjournment sine die. Termination of a sitting of the House without any definite date being fixed for the next sitting. Expunction. Deletion of words, phrases or expressions from the proceedings or records of Rajya Sabha by an order of the chairman for being defamatory or indecent or unparliamentary or undignified. Rule 380 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha gives the Speaker the discretion to expunge any words or expressions used in debate that are considered defamatory, indecent, unparliamentary or undignified. Maiden speech. First speech of a member in the House after election/nomination to Rajya Sabha or Lok Sabha. Hello and a very warm welcome, viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host, Kriti Mishra. India's criminal justice system is set for a complete overhaul. The government has introduced 3 key bills to replace colonial-era courts with the objective of speeding up trials by laying down specific timelines, boosting rates of conviction by improving the quality of evidence, and providing relief and protection to victims. So what are the key provisions in the bill? What are the major recommendations of the Parliamentary Committee on Home Affairs? Well, we've packed everything for you in this edition, so come along. India's criminal justice system has been predominantly shaped by laws and regulations inherited from the British colonial era. In the post-independence years, these legal foundations underwent alterations and amendments to align with the evolving requirements of modern times. The experience of 7 decades of Indian democracy calls for comprehensive review of our criminal laws, including the Code of Criminal Procedure, and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people of India. The pre-independence criminal laws were used by the British to protect their colonial interests, to rule the people and the country, and to maintain their authority and supremacy over India. There was a need for comprehensive review of the criminal laws, the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code, and the Indian Evidence Act, and adapt them according to the present-day needs and aspirations. In fact, Prime Minister of India also advocated for the need to revamp all the legislations enacted across all departments during the British era. देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। In accordance with the basic principles enshrined in the Constitution of India, it was proposed to bring about fundamental comprehensive changes in the framework of Indian criminal laws. With this objective in view, the existing Indian Penal Code of 1860, the Code of Criminal Procedure 1973, and the Indian Evidence Act 1872 would now be repealed and replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and the Bharatiya Sakshi Bill 2023, respectively. The Home Affairs Minister introduced these 3 key bills in the Lok Sabha on 11th of August 2023. ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा. The main problems in present legal system are very complex. There's huge pendency of cases in the courts.
There's low conviction rate, and the amount of fine prescribed in the laws is very less, from 10 rupees to 500. There's overcrowding of under-trial prisoners in prisons. There's very little use of modern technology in the legal system. And there's delay in investigation, pending hearing process, and delayed justice due to inadequate use of forensic evidence. The new bills seek to historically address the problems in the criminal justice system to strengthen law and order, simplify legal procedure, provide speedy justice, and adapt the criminal justice system with the technological advancements. Further, all the outdated references have been deleted in the proposed bills. These bills seek to create a legal structure which is citizen-centric and to secure life and liberty of citizens and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 repeals the Indian Penal Code 1860. Key changes proposed in the bill include sedition. IPC defines sedition as bringing or attempting to bring hatred or contempt or exciting disaffection towards the government. It is punishable with imprisonment term between 3 years and life imprisonment and or a fine. The bill removes this offence. It instead penalizes the following: exciting or attempting to excite secession, armed rebellion, or subversive activities, encouraging feelings of separatist activities, or endangering sovereignty or unity and integrity of India. These offences may involve exchange of words or signs, electronic communication, or use of financial means. These will be punishable with imprisonment of up to 7 years of life imprisonment and a fine. Terrorism. The bill defines terrorism as an act that intends to threaten the unity, integrity, and security of the country, to intimidate the general public or disturb public order. The bill also penalizes conspiring, organizing, or assisting in preparation of any terrorist act within an imprisonment term between 5 years and life imprisonment and a fine of at least 5 lakh rupees. Petty organized crime. The bill makes attempting or committing petty organized crime punishable with imprisonment between 1 and 7 years and a fine. Death penalty for gang rape of minor. IPC allows death penalty for gang rape of women below 12 years of age. The bill now allows death penalty for gang rape of women below 18 years of age. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 was introduced in the Loksabha on 11th of August. It repeals the Code of Criminal Procedure 1973. The code provides for procedure for arrest, prosecution, and bail for offences under various acts, including the Indian Penal Code of 1860. The highlights of this bill are trials in electronic mode. The bill provides that all trials, inquiries, and proceedings may be held in electronic mode. It also provides for the production of electronic communication devices likely to contain digital evidence for investigation, inquiry, or trial. Electronic communication includes communication through devices such as mobiles, computers, or telephone. Forensic investigation. The bill mandates forensic investigation for offences punishable with at least 7 years of imprisonment. Timelines for procedures. The bill prescribes timelines for various procedures. For instance, it requires medical practitioners who examine rape victims to submit their reports to the investigating officer within 7 days. Trial in absence of offender. The bill provides for conduct of trial and pronouncement of judgment in the absence of a proclaimed offender. This shall be done when such a person has absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him. The Bharatiya Sakshi Bill 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Indian Evidence Act of 1872. The Act provides rules for the admissibility of evidence in legal proceedings. The highlights of Bharatiya Sakshi Bill are admissibility of electronic or digital records as evidence. The bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as paper records. It expands electronic records to include information stored in semiconductor memory or any communication devices like smartphones or laptops. Oral evidence. Under the Act, oral evidence includes statements made before courts by witness in relation to fact under inquiry.
The bill adds any information given electronically to be considered as oral evidence. Secondary evidence. The bill expands secondary evidence to include oral and written admissions and the testimony of a person who has examined the document and is skilled in the examination of documents. दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा, वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आजादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, इसीलिए फोरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया। The need to reform and rationalize the Code of Criminal Procedure, as also the need to undertake a comprehensive review of the criminal justice system of India, has been expressed from several quarters from time to time. The Law Commission of India, in its various reports, has recommended several amendments in the criminal laws of the country. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar referred these three bills to the department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on 18 August 2023 for submitting its report within 3 months. The committee, during its deliberations, held a total of 12 meetings spanning more than 45 hours. 19 domain experts were called before the committee to present their views on the bills. The experts invited to participate in the deliberations included senior advocates practicing in the Supreme Court and various high courts, renowned university professors, retired judges, Chairman of Law Commission of India, retired Director General of Police, and besides, the representations received from private individuals and organizations and members of Parliament and ex-members of Parliament were also examined by the committee. Some of the major observations and recommendations of the committee include: the text of all three bills is in English language, and hence the proposed legislations are not in violation of provisions of Article 348 of Constitution. The Sanhita has widened the scope of definition of gender by including transgenders. For the first time, community service has been introduced as a punishment in Sanhita for petty offences. The committee appreciates the government for introducing death penalty as a punishment for the offence of gang rape on a woman below 18 years of age, which was not provided in the IPC. The committee has recommended the government to seek the opinion of Attorney General and Solicitor General of the country with regard to clause 1012, which is apparently about mob lynching. The committee appreciates the government for enhancing the punishment under clause 104 on causing deaths by negligence from 2 years to 7 years. However, the committee has recommended reducing this punishment to 5 years, as the proposed punishment of 7 years is unreasonably long. The committee commends the addition of Offence of Terrorist Act in the Sanhita. The committee compliments the government in deleting the term sedition from criminal law by rephrasing it without compromising the security of the state. The committee has recommended the government to include Section 377 of IPC in the Sanhita. A recommendation has also been made to retain Section 497 of IPC on adultery in the Sanhita by making it gender neutral. This is 75th year of our independence. Now, the salient features: the Bharatiya Nyaya Sanhita, number of sections have been reduced from 511 to 356, and the chapters from 23 to 19. This is regarding Bharatiya Nyaya Sanhita, that is Old Indian Penal Code. We have used the word Nyaya, not a dand, not a penal, because this is a democracy. We are giving justice, not a dand, not a penalty. 24 sections have been deleted from Old Indian Penal Code.
22 have been added and a large number of sections have been rearranged. The existing laws stemming from the colonial era no longer represented the present-day dynamics and aspirations of Indian society. The existing laws have often been criticized for being outdated and not in tune with the present-day needs. The proposed Bharatiya Nyaya Sanhita seek to change the nature of law towards providing justice rather than punishment and would be a step forward to remove traces of colonial mindset. It was a mammoth task of drafting comprehensive amendments to the criminal laws and 4 years of intense discussions for making new laws that imbibe Indian thought process and the Indian soul. A comprehensive review of criminal justice system in our country was the need of the hour to bring it on par with the contemporary aspirations of the people of India. Well, viewers, that's all I had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side. नौसेना भारतीय सेना का सामुद्रिक अंग है, जिसकी स्थापना 1612 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी मैरीन के रूप में सेना गठित की थी। 26 जनवरी 1950 को रॉयल इंडियन नेवी का नाम बदलकर भारतीय नौसेना कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने आजादी की रक्षा ही नहीं की, बल्कि आजादी हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय नौसेना दिवस। भारत की तीनों सेनाएं थल, वायु और जल सेना हर तरफ से देश की सुरक्षा में तत्पर हैं। आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में हमारी तीनों सेना आती है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो जब भी दुश्मन ने जल सीमा से हमारी सुरक्षा में सेंध करने की कोशिश की है, तब भारतीय नौसेना के आगे उन्हें हार मानना पड़ा है। भारतीय नौसेना की इस उपलब्धि, साहस के कारण देशवासी उन्हें सलाम करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के तौर पर मनाते हैं। कैसे हुई नौसेना दिवस की शुरुआत? भारतीय नौसेना दिवस मनाने की शुरुआत मई 1972 में वरिष्ठ नौसेना अधिकारी सम्मेलन में हुई थी, जिसमें 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। हम 4 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं नौसेना दिवस? 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारतीय हवाई अड्डे पर हमला कर दिया था। पाकिस्तानी सेना के आक्रमण हमले का जवाब देते हुए भारतीय नौसेना ने 4 और 5 दिसंबर की रात हमले की योजना बनाते हुए सैकड़ों पाकिस्तानी नौसेना के जवानों को मार गिराया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत भारतीय नौसेना की कमान थी कमोडोर केपी गोपाल राव के हाथ में। इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नौसेना के 3 क्षेत्रीय कमान हैं: ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और साउदर्न नेवल कमांड। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का एक अलग रुतबा है। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में
इंडियन नेवी की गिनती होती है। इंडियन नेवी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी तेजी से कदम उठा रही है। उम्मीद है भारतीय नौसेना 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगी। नौसेना देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के साथ ही प्राकृतिक आपदा आने पर भी मानवीय सहायता अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा के अलावा हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा भी है और इसकी सुरक्षा के लिए नौसेना की ताकत को लगातार हम बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सक्षम भारत। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। हमारी नौसेना लगातार मजबूत हो रही है, ताकतवर हो रही है। हमारी गिनती दुनिया भर की नौसेनाओं में होती है। हम सबसे आगे निकल रहे हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि 2047 तक हमारी नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि पूरा जो सफर है अब तक का, वो इतना भी आसान नहीं था। तमाम चुनौतियां आई, लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज बातचीत होने जा रही है सक्षम भारत की इस खास कड़ी में। यूं तो देश की रक्षा में तैनात हमारी तीनों सेनाएं मजबूत हैं, आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन बात अगर भारतीय नौसेना की करें तो इनकी चुनौतियां थोड़ी अलग हैं। लेकिन भारतीय नौसेना इनसे निपटने में सक्षम है। अथाह समुद्र में देश की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना में आत्मनिर्भर भारत के मूल मंत्र में खुद को रेस में सबसे आगे कर दिया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का एक अलग रुतबा है। हिंद महासागर में चीन का सैन्य दखल बढ़ रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए इंडियन नेवी हर तरह से तैयार है। भारतीय नौसेना की गिनती दुनिया भर की टॉप 10 नेवी में होती है, जो कि काफी पावरफुल नौसेना है। 250 से अधिक विमान, 130 युद्धपोत और पनडुब्बी, 23 विध्वंसक फ्रिगेट्स, 4 फ्लीट टैंकर, 18 ASW और मिसाइल कॉर्वेट शामिल हैं। अटैक सबमरीन के अलावा और भी काफी शक्तिशाली हथियारों और युद्धपोतों से लैस इंडियन नेवी के आगे दुनिया के कई देशों की नौसेनाएं नहीं टिकती हैं। नौसेना देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के साथ ही प्राकृतिक आपदा आने पर मानवीय सहायता अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है।
भारत की कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। इस लिहाज से इंडियन नेवी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आंतरिक सुरक्षा और समुद्री व्यापार से जुड़ी चुनौतियों से इसे निपटना आता है, जिसकी तैयारी मेहमान भी मौजूद हैं। हम आपका परिचय उनके साथ में करवाना चाहेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं सुनील मिश्रा, डीजी SIDM से, वाइस एडमिरल रिटायर्ड सतीश सोनी जी, VIF से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं, शुरुआत करना चाहेंगे सर हम आपके साथ में। हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे सशक्त नौसेना की बात आती है तो ये अब हम सबको पता है कि अगर मैं तीनों सेनाओं में बात करूं और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करूं, तो सबसे पहले नौसेना खुद को रख रही है। विथ 75% to 95% हम पहुंच चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? पहले तो संसद टीवी को बहुत बधाई इस खुले एनवायरनमेंट पे हम लोगों को आमंत्रित करने के लिए। पीछे बहुत अच्छा नया बैकड्रॉप है, नया पार्लियामेंट है। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया हम लोगों को, तीनों सेनाओं को और इंडस्ट्री को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, कि हमें अपनी जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं और नीड्स हैं उसमें अपनी सेनाओं की ज़रूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण था, एक आमूल-चूल परिवर्तन है जो हम लोग पहले जिस दिशा में चल रहे थे उस दिशा से बिल्कुल हट करके है। पिछले 6-7 सालों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया, कई तरह के बदलाव किए, और वो जो बदलाव हुए उसका असर अब इंडस्ट्री में दिखने लगा है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुफीद है।